I don't wanna call you later. It's tearing my heart up like it's. Hello, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing great and staying safe. So I am Sheetu और आज है 27th of May which is Saturday, and from 27th of May I have my practical exams for second semester, and which are the last final exams for first year. Yes, we are done with first year, we are done with second semester. So in Delhi University we only have NSEMs, like we have exams, final exams after every semester, at the end of every semester. So from 7th of May I have my practical exams. I have total 7 practical exams. First is on 27th of May, which is of psychology of individual differences. Second is on 31st of May, which is for basic stats, and on 2nd June I have my last practical for social psychology. So आज है 24th of May, which is Saturday. Now the thing is, the main plot twist is कि आज Saturday है, and then I have Sunday and then I have Monday. After 3 days I have my practical exam for PID, which is psychology of individual differences. लेकिन the thing is, the practical for this subject is not completed yet. We have to get it signed on Monday, which is just a day before our practical exam. Yes. So our practical exam for psychology of individual differences is to be signed on Monday. Disclaimer, I am not late for the submission, guys. I'm up to date. I am on up to date. I have submitted every single thing on time. So मेरी गलती नहीं है. Submission date ही वो है. Just clearing my part. So अब the thing is, and वो practical का थोड़ा सा section अभी is not completed. And the second thing to add on it is social psychology का भी practical complete नहीं है. सिर्फ मेरा नहीं, किसी का भी नहीं है. डेडलाइंस भी ऐसी हैं. सो द थिंग इज, नाउ आई हैव टू कंप्लीट दोनों प्रैक्टिकल्स, सोशल साइकोलॉजी का भी और PID का भी. वो कंप्लीट करना है और उसके बाद प्रैक्टिकल का पढ़ना है. एंड आई जस्ट, और मैं मंडे को मुझे कॉलेज जाना है, तो मेरा पूरा दिन उधर ही निकल जाएगा. सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग मंडे फॉर माई प्रिपरेशंस. So I basically have 2 days to complete both of my practicals and studying for the PID ka practical. Hi guys, so currently it's 3:18. It has been an hour मैं पढ़ने बैठी हूँ, and right now I am not done with even a single practical. मतलब things got really confusing and मेरे दोनों practical simultaneously चल रहे हैं, and I'm not happy with the progress because my initial plan was to complete these practicals yesterday, but I couldn't because I was like really tired. So I thought चलो कोई बात नहीं, we'll do it tomorrow and then we'll start with PID जो practical है Tuesday को, उसका पढ़ाई. But I am clearly lacking behind and I think these practicals got stretched way too long, जितना इन्हें होना चाहिए.
a quick update. It is currently 2 o'clock. Kindly ignore the background noise क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर. I am done with one of my practical, but I'm still left with another one. Like 30-40% of the another one, I am still not done with it. But I cannot do it anymore because I have been like literally doing these practicals पूरा दिन, and I cannot do it anymore. I'm so sleepy at this point that I can sleep at any moment. So, today is 25th of May, Sunday. It is currently 10 o'clock and I woke at 9 because I slept really late. So, I really woke late a lot, but So, the thing is, one of my practical is done, which was of PID, personality wala. In that we did 16 PF ka psychology test, and the second one is of social psychology, which is just a comparative study between the self-concepts of young people and adolescents and middle-aged people. तो मुझे उसका मेरा बस उसका रिजल्ट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वो रह रहा है, वो करना है. एंड उसके बाद आई रियली हैव टू स्टडी फॉर माई प्रैक्टिकल विच इज़ ऑन ट्यूसडे बिकॉज आई डोंट काउंट मंडे. आई एम ओनली गिविंग माई सेल्फ दिस संडे. So I have to do that, and I think that's pretty much it for today. Like that is the plan. I'll really intended to complete this practical 2 घंटे में. So it is currently 10:15. I am done with both of my practicals. मेरे एक practical था for social psychology and एक practical था for personality का से related था, individual differences वाला. So I am done with both of the practicals finally, but it has consumed all of my weekend and I am literally very behind my schedule and the things that I have planned कि मुझे ये करना है, and I'm really disappointed. But ठीक है, I cannot do anything in that because it was very complicated. Like it took my whole day to complete those practicals and they were so confusing. It was a very frustrating process if I would have to sum it up. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आज हम बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं. हमें प्रोडक्टिव नहीं रहे, हमने काम कॉलेज में आके पूरा किया क्योंकि हमारी दोनों की बस रेफरेंसेस रह रही थी. क्यों बोल रहे हैं, मेरे तो और भी रह रहा था. और भी मेरी बस रेफरेंस रह रही थी, इसका और भी रह रहा था. बट हमने काम कंप्लीट कर लिया. हम वेट करें कि मैम चेक कर दे, तो हमने टाइम से पहले कर लिया. 12 बज के अभी तक तो चेक हुआ नहीं है. कल हमारा प्रैक्टिकल, हम पढ़ेंगे कब, घर कब जाएंगे. स्पाइरल बाइंडिंग करानी है अभी जाके.
फिर पढ़ना है और कल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सबमिट करना है। तो पता है उसकी कौन डेट दी थी मैंने 31st को भी करना है। So, it is currently 6 o'clock and I got back from college like an hour and a half before, and I was so frustrated, so angry, and I was this close to having a mental break. I was just at the verge of crying. Realize one thing, ये जो प्रैक्टिकल के जो काम है इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होता है. यू हैव कोई ना कोई चीज़ जो रह जाती है, यू हैव टू डू इट. टुडेज डे वॉज सच अ क्योर्स एंड आई न्यू इट. मुझे कल ये पता था कि ऐसा होगा, बट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सारा गलत होगा, ये सब नहीं पता था. मुझे पता था दैट आई विल बी लेट कॉलेज आने में, कॉलेज से घर आने में, एंड दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्पायरल एंड लर्निंग, बट आई वॉज नॉट इतना कन्फर्म दैट इट्स गोइंग टू टेक दिस लॉन्ग, बिकॉज आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक. एंड अभी भी आई हैव कम्प्लीटेड माई एनालिसिस, बट मेरा एक टॉपिक अभी भी गलत है, दैट इज डिस्कशन, बिकॉज डिस्कशन इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस, एंड इफ योर एनालिसिस इज रॉन्ग, योर डिस्कशन इज रॉन्ग, एंड एवरीथिंग दैट. So I have to do that, and then I will finally sit and study. So it is currently 4 o'clock. I came home around 2:30 and I had my lunch and then I was resting. Now the practical exam, the written test went great. मतलब मुझे एक 20 marks का होता है and there are 2 questions, you have to do 1, and it went great. I knew every single answer, मतलब जितने भी parts थे I knew every single answer and I did a pretty good job. But the Viva didn't went great. I just don't know what went wrong, but I know that it didn't went great. मतलब उतना अच्छा नहीं था जितना I was expecting, that I knew it. I won't say that the teacher was asking question out of syllabus. She was asking questions from the file only, but those were very unexpected questions. मतलब जो हम expect कर रहे थे about the theories and review of all the researches, वो नहीं आया था. She was asking some unexpected questions जो फाइल में थे, but इतना ध्यान नहीं दिया because we were more focused on the expected questions. So I won't say that it went great. The Viva went fine, but my written test went great and I was little demotivated by the Viva because I thought कि oh my god मेरा written test इतना अच्छा गया, अब तो मेरा Viva भी बहुत अच्छा जाएगा. But we did a mistake. काम होने से पहले ही हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए. And I was like भाई अब तो मेरा Viva भी बहुत अच्छा जाएगा. वो ठीक गया बट उतना अच्छा नहीं गया. मैं चाहती थी कि मेरा बहुत अच्छा जाए, बट मेरे बाकी फ्रेंड्स का भी इतना अच्छा नहीं गया बिकॉज सेम थिंग थी कि टीचर्स आस्क्ड इन द टीचर द इन्विजिलेटर, शी आस्क्ड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमें लगा था ये तो नहीं, ये वाले आएंगे, ये पढ़ते हैं, बट वो नहीं आए. बट या इन ऑल इट वॉज फाइन. नाउ माई नेक्स्ट इज ऑफ BSIP विच इज़ बेसिक स्टैट्स इन साइकोलॉजी. वो इससे भी थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, बट हाँ विल डू इट. इट इज़ ऑन 31st. So yeah, I have to prepare for that. But आज तो I'll sleep now and I will wake up tomorrow morning. आज रात को मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. बट हाँ, मेरा सेक का एक सबमिशंस है, मतलब फाइनल सबमिशंस ऑफ द एक्टिविटी. आई हैव दैट एज एन अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. उसका कोई एग्ज़ाम नहीं है मेरा, तो बस उसके जो एक्टिविटीज़ हमने पूरे सेमेस्टर किए हैं वो सबमिट करने हैं, तो वो करने हैं बस.
वो ऑलरेडी बने हुए हैं बट जस्ट हैज़ टू कंपाइल देम एंड सबमिट देम. वो करके एंड आई विल स्लीप फॉर द होल नाइट टुडे एंड आई विल वेक बिल्कुल अगले. So yeah, that's it for this vlog. I hope you like it and I try to keep it as real as possible, like very realistic exam days. जो भी हुआ that was very realistic and this is how my days went. So I hope you liked it and I'll see you next time, and for more such content make sure to like, subscribe and share and comment down below your favorite part. And if you haven't followed me on Instagram, make sure you do that. I'll put the link in the description box and in the comment. And yeah, I'll see you next time. Till then, take care.